Hello guys, today we will be studying the chapter called light. So let's study the light, laws of reflection and how we can see objects. So introduction to light. The world as we know it is largely known through senses, and the sense of the sight is one of the most important sense. It is only when the light from an object enters our eyes that we see it. The light might have been either emitted by the object or reflected by it. Some of the important terminologies related to light are: light is the energy that enables us to see, light is emitted from source such as the sun. The world usually refers to visible light, which is visible to the human eye and is responsible for the sense of the sight. So whatever we see around us is just because the light. And how it works, like when there is a reflection of light, we can see any objects. So there must be light to see the objects. So how do we see objects? It is a major thing. Now let's discuss it. How our eyes alone do not allow us to see. Light from a surface fall on the object and then bounces off onto our eyes, and that is how we perceive it. That means हमारा आँख सिर्फ लाइट नहीं देख सकता है. वी विल लाइक कि वी हैव आईज एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. नो, to see the objects around us we must have to experience the reflection, that is that rise from the source will fall on the object, and then from that it will bounce back to our eyes so that we can perceive it and see the objects around us. Then only we can see objects. Now what is reflection? So we have seen various experiments where we make the rays from the eyes to the object, from the object to the eyes. So all these are the phenomenon of reflection. So what exactly is reflection? So let's discuss it. Light gets reflected off surfaces. Any surface that is really well polished or shiny acts as mirror. The phenomenon of light bouncing off surface is called reflection. सो रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से नहीं हो सकता है. रिफ्लेक्शन उन्हीं सरफेस से हो सकता है जो वेल पॉलिश्ड है और वो शाइनी है. मतलब एक मिरर ले लो जिसके पीछे सिल्वर प्लेटिंग की गई है तो वो मिरर ही एक्ट करेगा. तो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दैट शाइनी सरफेस और द पॉलिश सरफेस, सो इट बाउंसेस बैक टू आवर आइज. तो जब ये बाउंस बैक होता है तो ऑब्जेक्ट से लाइट पहले सरफेस पे आएगा, फिर सरफेस से हमारे आइज में होगा, तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. नाउ हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर हम रफली बात करें तो एक तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में लाइट जाएगी, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी. तो लेट्स टॉक इट. The ray of light that strikes a reflecting surface is called the incident ray, and the ray that gets reflected back is called the reflected ray. The imaginary line that is perpendicular to the reflecting surface is called the normal. So एक perpendicular line होती है reflected ray and incident ray के, इसको normal कहते हैं. The angle of incidence is the angle between incident ray and the normal. And what is angle of reflection? Angle of reflection is the angle between the reflected ray and the normal. सो तीनों एंगल जो हमारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये जो रे डायग्राम हम बनाएंगे, एक मिरर लेंगे, ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और फिर वो सरफेस या मिरर पे टकरा के जो रे वापस हमारे आइज़ में आ रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. तो जो हम एक्चुअली सी करते हैं डैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, और ये तीनों सेम प्लेन पे राय करते हैं. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
and the angle of incidence, the angle of reflection and normal all lie on the same plane। मतलब इस चीज़ को होने के लिए तीनों को सेम प्लेन पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इस प्लेन पे, एक उस प्लेन पे, एक इस प्लेन पे। मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस तीन होते हैं, तो अगर हमारा एक्स वाई प्लेन में ये इंसिडेंस रे है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होना चाहिए। थैंक यू।